Hello students, you all are welcome in grade 6 subject maths. Last topic of this chapter, exercise 14.6 continue, page number 291. Question number 1, draw angle POQ measures 75 degree with the help of protractor and find its line of symmetry. Students, if you want to find the line of symmetry, that line of symmetry which will be passed exactly from half of that angle, right? So first of all, we have to draw measure angle 75 degree with the help of protractor and make it half. You see, you draw the line first, OQ. Draw ray OQ. Then put the protractor at O, 72, 70, 71 and 72. Okay. Join this ray and name P. So POQ is equal to 75, not 72, sorry, 75 degree. So POQ is equal to 75 degree I have drawn, and then make it half. So how to make it half? Put your pointer over here, draw an arc, put the pointer over here, draw an arc, put the pointer over here, draw an arc, take scale, so this is the line of symmetry. Line of symmetry of angle POQ. In exam, suppose instead of 75, 80 degrees there, 100 degrees there. So you draw an angle of 100 degree or whatever the angle, and then make it half like this way. Okay. Extra, that is homework. It is your homework, right? Do by yourself. Draw angle ABC, measure 50 degree and find its line of symmetry, right? Question number 2, draw an angle of 147 degree and construct its bisector. It's very simple. Take the protractor, draw ray, say for example BC, put protractor at point B. Now this 147 angle, it is obtuse angle, right? 90, 100, 110, 20, 40, 147 is lie between 140 and 150. So it is over here 147 degree, right? 140, 140, 145 and then to 147. So this is your 147 angle. Now make it bisector. Take compass, take any radius, draw an arc. बाइसेक्टर का यही है, ये ऐसे ही करने का, राइट?
right? Then slightly increase this arc, draw an arc over here, draw another arc over here, take scale, draw a line, जैसे सिमेट्रिक लाइन हमने ड्रॉ की वैसे, बराबर. सो दिस इज योर बाइसेक्टर, यानी 147 का आधा एग्जैक्टली हो गया. अगर आप प्रोटेक्टर से देखोगे यू विल गेट 147 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 5 जा 73.5 एग्जैक्टली आपको ये मिल जाएगा, वेरीफाई करेंगे तो, बराबर हो गया 73.5. Four, draw an angle of measure 150 degree and divide into 4 equal part. पहले प्रोटेक्टर से 150 डिग्री ड्रॉ करो और उसका 4 पार्ट करना है. 2 पार्ट कैसे करना है, तो बाइसेक्टर कर दो और हर एक एंगल का 2 बार बाइसेक्टर कर दो तो 4 पार्ट हो गए, राइट. वेरी सिंपल. In last one angle here I forget to put this, okay, and here also you put that D. So write down angle DBC or angle ABD is the bisector of angle ABC. ऐसे. Come to our point. So draw first QR from point Q, measure angle 153 degree, 150, 151, 2 and 3, 153 degree. So this is 150, 151, 2 and 3, 153 degree. Join this ray, name as P, take convenient radius draw an arc, increase slightly arc, draw another arc, so now it becomes 2 angle. Again from here draw an arc, from here, right, intersection point this, similarly from here now you can see here we have drawn 4 equal angle of this whole angle EQR, equal part, right. So if you draw with the help, if you measure with the help of protector, all parts will be same, right.
exactly same. So 153 divide by 4. When you do 153 divide by 4, 4 3s are 12, 4 5s are 20, 4 7s are 4 8s are 32, 4 2s are 8, and 4 5s are 20. 38.25 approximately each angle you will find. 38 point, you see this is 38 point, approximately 39, 38 होगा, 38 exactly. हर एक एंगल 38.2 का होगा, 25 का होगा. You will get this. So like this way you can make it 4 एंगल. पहले एक एंगल बनाओ, उसका हाफ करो, फिर हर एक एंगल का हाफ करो, right? So like this way you can find 4 equal angles. Draw right angle and construct its bisector. Very simple. Take protractor, say BC, from point B construct 90 degree. ABC 90 degree. Then bisector, make it half. Take convenient radius, increase slightly. So join this ray, say this is D. So angle DBC and angle ABD are the bisector of 90 degree. Like this way you can do. Now question number 5. Construct an angle with the help of ruler. With the help of ruler and compass. Okay, do not use protractor to draw angle, right? आपको स्केल और कंपास से एंगल ड्रॉ करना है जो आपको दिया है. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 60 डिग्री. तो 60 डिग्री कैसे ड्रॉ किया जाता है, फिर हम प्रोटेक्टर से वेरीफाई करेंगे, बराबर. तो 60 आ जाएगा, देखो. तो 60 के ऊपर सब कुछ है, देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ अ लाइन, करेक्ट, से BC, draw ray BC, then take convenient radius, don't change this, fix ही रखिए. From point B draw an arc, don't change the radius. From here draw another arc, right? Join this. So this is your 60 degree construction. Okay, now you can verify with the help of protractor. You see it is an exactly 60 degree. Okay, next 90 degree construction. Draw ray BC or QR, whatever it may be, you can write any alphabet. Now then draw an arc, big arc यहाँ तक draw करिए. Now do you know that student, this is 60 degree. 60 plus how many is equal to 90? 60 plus 30. तो अगेन ये 60 का हुआ, ये 60 का हुआ, इसका आधा क्या हो जाएगा 30. ये देखो,
बराबर। ये 60 का ड्रॉ करो दोनों, फिर यहां रख के इसका ये आर्क करो तो ये आधा हो जाएगा। ये आपका हो गया 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन। यहां रख दो ए। सो अब प्रोटेक्टर से आप करोगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, ये देख लो 90 डिग्री, करेक्ट। नाउ 120 डिग्री, ड्रॉ रे से क्यू आर, then draw an arc. This is 60 and this is 60. 60 plus 60, 120. So this is 120 degree. One arc means 60 degree, another arc means 120 degree, right? Now 45 degree means what? 90 का हाफ। तो पहले आप 90 का कंस्ट्रक्शन करिए, उसका बाइसेक्टर एंगल कर दीजिए। ओके, सो ड्रॉ दिस एंगल, सॉरी ड्रॉ दिस रे से BC। यहां P दे दीजिए, PQR। सिक्सटी और इसका हाफ, राइट। देखो हमें 45 एंगल का ड्रॉ करना है, तो 90 का नहीं करना है, तो आप ऐसे डॉटेड लाइन कर सकते हो, बिकॉज हमको डिमांडिंग 45 का है। तो यहाँ आ गया, देखो ये तो भी थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज कर दो रेडियस, और यहाँ से और यहाँ से, बराबर, ऐसे और ऐसे, बराबर हो गया, 45 हो गया। So this is your 45 degree. Put ABC is equal to 45 degree. Correct. So dear student, this is 120 degree, means you have to draw this QR first. Draw an arc 60 and 60, 120 degree. 45 first of all, construct 90 degree angle, बराबर। तो ये पहले आप करो, बराबर। इसके बाद 60 और 60 लगाओ, इसका हाफ करो, बताता हूं, देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ दिस, करेक्ट, देन दिस इज 60, दिस इज 60, इसका हाफ कर दो यहां से, ये हाफ, बराबर, एंड ड्रॉ दिस। We want to draw 45 degree, 90 का नहीं चाहिए, that's why we draw its dotted line, correct, and 90 का हाफ, बराबर। तो स्लाइटली थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए का आर्क, यहाँ से एक आर्क लगाइए, एक यहाँ से लगाइए, ये जो हुआ आपका, ड्रॉ दिस इज AB, रे BA ड्रॉ, देन दिस इज एंगल ABC is 45 degree. Now 135 degree में, first of all draw this ray BC, draw, take convenient radius, draw an arc, okay, then don't change this radius, this only, this is 60, this is 60 and this is 60, बराबर। तो 60 plus 60, 120, 120 plus कितना is equal to 135, 120 plus 15 is equal to 135, right? So ये 60 60, ये भी 60 है, यहाँ तो इसका आधा करिए, इसका आधा, तो यहाँ से ऐसे लिया, यहाँ से
इसको ऐसे लिया बराबर, और ये हाफ कर दिया, और इसका आधा मीन्स 15, तो यहाँ से ये लो और यहाँ से ये लो, तो ये बन गया आपका 120 प्लस 15 दैट इज 135. Similarly, this 22 integer 1 upon 2 degree means what? It is the half of 45 degree. So first of all you have to construct 90 degree construction that you know very well, means you have to draw from here. These are right 60, 60, then this, so this is 90 degree. Half of this, तो यहाँ से थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए बराबर, ये और यहाँ से ये, तो ये आपका 45 हो गया. इसका हाफ यानी यहाँ से ये करो और ये यहाँ से करो, तो ये आपका हो गया 22 इंटीजर 1/2. So like this way students you can do the remaining question number 6, 7, 8 and 9. So here your syllabus is over, whole syllabus is over here, maths. So next time we will start our revision. Till then you have to, whatever your pending work, please complete it. Worksheet corresponding belongs to whatever the extra video I will send, correct? So till then, goodbye, have a nice day. If you have any problem you can contact me. Thank you.